today we will discuss estimation of energy requirement. So, average daily calorie requirement for an average patients, most of the hospitalized patients, this formula, which is based on the Harris-Benedict equation, that will give us basic energy, basal energy expenditure of the most of the patients. So what this equation says? So for the men and women, there is a different formula for men and women. For men, basal energy expenditure is 66.4 plus weight in kilogram multiplied by 13.7 plus height in centimeter multiplied by 5 minus age in years multiplied by 6.8. So for men, this formula gives us the best, most accurate basal energy expenditure. What? So हमें वेट को 13.7 से मल्टीप्लाई करना है, वेट इन किलोग्राम, हाइट को 5 इन सेंटीमीटर, हाइट को 5 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को 6.4 में ऐड करके एंड पर्सन की एज को 6.8 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है. सो दैट इज द बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर इन मेन. एंड इन वुमेन, in place of 66.4 there is a 65.5 plus weight is multiplied by 9.6 and added, and height in centimeter multiplied by 1.7 and added and subtracted what is age in years multiplied by 4.7. So this equation gives us the most accurate, so what it says, reliable estimate of energy expenditure, energy requirement in about 80% of hospitalized patients. So one more thing, that is the average estimate of basal energy expenditure in most of the patients. So but some ICU critical patients and some patient undergoing surgery and some severe diseases, so in that condition, that formula will be actual caloric need. So what is actual caloric need? That is the basal energy expenditure multiplied by stress factor. So stress factor vary according to the condition of the disease. So in some we will discuss about the various stress factors for various diseases. So in general, अगर हम बात करें कि ज़्यादातर पेशेंट्स की कैलोरी रिक्वायरमेंट अगर बात करें तो इट इज़ अबाउट 25 to 35 kilocalorie per kilogram per day. So it gives a rough estimate about 25 to 35 kilocalorie per kilogram per day. ज़्यादातर पेशेंटों का हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर आपको एक्यूरेट एस्टिमेशन चाहिए तो एक्यूरेट एस्टिमेशन मैन में दिस फार्मूला 66.4 प्लस वेट को 30.7 से मल्टीप्लाई, हाइट सेंटीमीटर को 5 से मल्टीप्लाई एंड इन दोनों को ऐड करना है 66.4 में एंड एज मल्टीप्लाइड बाय 6.8 को सब्सट्रैक्ट करना है. ऐसे ही वुमेन में ये है. सो दिस इज एक्यूरेट एस्टिमेशन एंड अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर टू स्ट्रेस फैक्टर. सो दिस फार्मूला, सो ये रफ एस्टिमेट जो है 25 से 35 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डे का, ये ज़्यादातर मरीजों में फिट बैठता है. बट अगर आप ओबेस इंडिविजुअल्स की बात करें तो ओबेस इंडिविजुअल्स में लीन बॉडी मास कम होता है बट बॉडी वेट ज़्यादा होता है. सो दिस गिव्स द ओवर एस्टिमेशन. सो व्हाट आर डिफरेंट स्ट्रेस फैक्टर्स फॉर जनरल in starvation, its stress factor is 0.8 to 1. So we have to multiply that formula, that calculation into basal energy expenditure into stress factor 0.8 to 1. And in elective operations it is about 1 to 1.1.
And in some severe conditions like peritonitis and other infections, मेजर इन्फेक्शन जिनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, उनमें इट विल बी स्ट्रेस फैक्टर, हमको जो कैलकुलेशन उस फार्मूला से मिली है उसको हमें 1.05 से 1.25 से मल्टीप्लाई करना है डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ पेरिटोनाइटिस. एंड वन कंडीशन दैट इज ARDS और सेप्सिस. सेप्सिस में बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर को 1.3 टू 1.35 से मल्टीप्लाई करना है. दैट विल बी एक्चुअल कैलोरिक रिक्वायरमेंट. व्हाट अबाउट पेनकेटाइटिस? इन पेनकेटाइटिस basal and the calculation which we get from that formula is multiplied by 1.3 to 1.8 depending upon the severity of pancreatitis. So this is the sometimes in surgical patients we doesn't know about the what is the calorie requirement of the patient. Normally we supplement the fluid. अगर पेशेंट 4-5 दिन तक ओरल नहीं ले पा रहा है, हमें एस्टिमेट है कि वो हम 6-7 दिन से ज़्यादा तक ओरल नहीं दे सकते हैं, देन वी नीड टू सप्लीमेंट द एनर्जी विद द हेल्प ऑफ डेक्सट्रोज, प्रोटीन. एंड protein is not the energy, but protein supplementation we will discuss later on about the what is the basic protein requirement, but energy in form of the glucose and fatty acids. So that formula will give the rough estimate. Thank you. I hope कि आपको ये हेल्पफुल लगेगा. थैंक यू वेरी मच.